जो कुछ भी मैं करना चाह रहा था for Major Sandeep's life, that started coming true. Amrita Shirodkar. So, I sat with her and I told her that this was my idea for the film, and she immediately talked to MB or Mahesh sir भी बहुत खुश हुए थे इस बात से. And next thing we know, heartfelt and tough thing. क्योंकि when I called them, अंकल डिडंट बिलीव कि कोई बंदा 10 साल से उनकी बेटी की जिंदगी को रिसर्च कर रहा है और हैदराबाद का कोई एक्टर है और यूएस में पला बड़ा और वो अब आके ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं, वो भी पैन इंडिया. Koimoi.com. Hello and welcome to Koimoi. This is Shubham Kulkarni, and we are in conversation today with Adi Visesh, who is coming up with his next project, Major, where he plays Major Sandeep Unnikrishnan. It's a big responsibility. First of all, tell me, how does it feel to represent a pan-India project as a lead, finally? It's good, I'm not sure it feels too different because at the end of the day, you do enough Telugu films and it's the same process, right? Yes. What feels different is actually that the fact that I'm telling Major Sandeep's story. Matlab, this is a dream project for me. Yes. And I've been an admirer and obsessed with his life since 2008 जब 27 नवंबर को मैंने उनका फोटो पहली बार देखा था Indian channels पे when I was in the US. So it's a dream come true making this film. Tell me, you have been with this story for years now, a decade, right? So जी. how did it shape up? Was there a point जब ऐसा लगा कि नहीं हो रहा? मतलब ये स्टोरी को पिक्चर बनाने की आइडिया तो 2018 में ही आया. तब तक मैं सिर्फ उनका एक खास एडमायरर, फैन, फॉलोअर, जो कुछ भी बोलना चाहते हैं हम बोल सकते हैं, मैं वो था. Yes. तो 2008 से लेके 2018 तक, मतलब 10 साल मैं सिर्फ पेपर क्लिपिंग्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, बुक्स, जो कुछ भी, मतलब कभी भी कोई एनिवर्सरी के लिए कोई एनएसजी आर्टिकल के बारे में, जब भी उनके बारे में लिखते थे, जहां पर भी कुछ छपता था, मैं सेव करता था एक फोल्डर में, एक बाइंडर में. It's only in 18 that I got the idea, और 19 में जब उनके माँ पापा से मिला था, अंकल और आंटी, मिस्टर उन्नीकृष्ण और धनलक्ष्मी आंटी, convincing them was a very, very heartfelt and tough thing. क्योंकि when I called them, uncle didn't believe कि कोई बंदा 10 साल से उनकी बेटी की जिंदगी को रिसर्च कर रहा है और हैदराबाद का कोई एक्टर है और यूएस में पला बड़ा और वो अब आके ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं, वो भी पैन इंडिया. So it took meeting them 4 or 5 times. Okay. And after meeting them the 4th or 5th time, uncle looked me in the eye and he said, I believe you'll make this movie about my son 10%. तो 10%. तो हम एकदम हंस पड़े. मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैं खुश हूं कि 0 से लेके 10 तक पहुंचा, या फिर उदास हूं कि 90% अभी भी बचा है. I decided then that ये फिल्म बने या ना मरे, I would treat them like my parents for the rest of my life. वो मेरे लिए बहुत important था. वो मेरे पेरेंट्स रहेंगे और मैं उनका बेटा रहूंगा. I will do whatever I need to for that. मेरे दिमाग में मैंने अपने आप से ये डिसीजन ले लिया था. So one day we were leaving their house. They live in one of their apartments in Whitefield in Bangalore is Sandeep Bihar. मतलब संदीप सर के नाम पे ही वो अपार्टमेंट्स हैं. We were leaving their flat and we were standing near the lift, और suddenly आंटी वहां डोर के पास खड़े थे. She started crying. So उन्होंने बोला इधर आओ. तो पास बुलाया and I went to her. क्या हुआ आंटी, मैंने पूछा. She said वहां से खड़े खड़े एकदम संदीप लग रहा है. So the moment she said that, I gave her a big hug, और मुझे तब पता चल चुका था कि हाँ, अब मुझे आंटी और अंकल के blessings मिल चुके हैं. Now, and then the fear started कि यार अब तो ये पिक्चर solid बनाना है. So that's how it went. Was it difficult to bring Mahesh Babu on board? How did that happen? So I have a couple of friends who wanted to float a production company, and they handle a lot of PR activity for Mahesh sir's company. So, I got to meet Namrata ma'am, who's a very good actress in her own right, Namrata Shirodkar. So
I sat with her and I told her that this was my idea for the film, and she immediately talked to MB or Mahesh sir bhi bahut khush hue the is baat se. And next thing we know, the ball started rolling. They brought Sony on board, and that's the reason aap aaj mujhse baat kar rahe hain. And suddenly जो कुछ भी मैं करना चाह रहा था for Major Sandeep's life, that started coming true. I always believed कि उनकी जो कहानी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी को देखनी चाहिए. Lot of people only know about the way he died. Yes. But my focus and whatever inspired me was completely about the way he lived. And that is what I wanted to show. Wow. So was there ever an idea to include Mahesh sir in the film as a cast member? Was there? Never. ना मेरे दिमाग में ऐसा सोच था, ना उनकी तरफ से कभी भी ऐसा कोई आइडिया था. मतलब it was never on the cards because I mean it never even factored into the equation. koimoi.com